Hello everyone, I am Chillbee and welcome to my beehive. So in today's video, I am going to get ready for Valentine's. I just decided to share this cute makeup look for you guys so that you can recreate on your own. Without wasting any more time, let's buzz into the video. So base makeup करके मैंने काफ़ी बार दिखा रखा है, so मैं details में नहीं जाऊँगी. But yeah, I'm just applying my moisturizer first. And it's the phytoceramide moisturizer from Earth Rhythm. It is so good. It is helping in my acne scars. अगर आप कुछ वीडियोस पहले देखोगे तो आई हैड लाइक अ लॉट ऑफ एक्ने मार्क्स एंड एक्ने की भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, बट या दिस जस्ट helps with it and it moisturizes my face really well, so that's all I need. And after that I am going to use my Lakme Absolute Blur Perfect Primer, which is amazing. It is not a silicone based primer and मुझे पहले सिलिकॉन वाले ही ज़्यादा पसंद थे, बट जब से मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट करा है it changed my world. So मैं बहुत थोड़ा सा लेती हूँ. ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा है हमारे प्राइमर के लिए, इस प्राइमर के लिए स्पेसिफिकली. सो मैं धीरे धीरे करके इसे अपने नोज़ पे लगाऊंगी and then on my cheeks, chin and forehead too. And मैं थोड़ा सा अपने एक्ने स्कार्स पर लगाती हूँ because I just feel कि ये काफ़ी अच्छे से उन्हें स्मूदन आउट कर देता है and वो इतना बम्पी नहीं रहता है. So yeah, it is kind of very nice. And now I'm taking my Super Stay foundation in the shade 128 Warm Nude and taking my Miniso Beauty Blender, dipping it in and blending. Now if you guys don't know कि मैं अपना foundation कैसे लगाती हूँ या फिर मैं कैसे blend करती हूँ, then I would suggest watching this video right here because इसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा, like basics of how I do my base makeup. So you can just watch it and ouch. So you can watch it and learn from there. And now I'm taking my Sugar Magic Wand Waterproof Concealer in the shade 12 Con Leche and concealing the dark areas of my face like my under eyes, my nose, like बस मैं वहाँ लगा रही हूँ जहाँ पे भी मुझे highlight करना है थोड़ा सा. I'm also concealing my dark spots like these acne scars and a little bit here because I have a lot of pigmentation here. I recently found out that, and yep, I look like a ghost. And now by this side, I am just going to blend everything in. And now with a fluffy brush, I am going to set my face with powder. And for that, I am using Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Foundation in the shade 112 Natural Ivory. And our face is finally all complete. Ab bas bari hai blush, contour and highlight ki. And for that, I use my Sugar palette in the shade 02 Vivid Victory. It is awesome. I'm going to take this brown shade and make a fish face like this and just brush it all over the line. And जितना भी बचा हुआ होता है वो मैं अपनी जॉ लाइन और हेयर लाइन पे लगा लेती हूँ just to give a depth वाला effect. I don't know what it's called, but मैंने बहुत लोगों को देखा है करते हुए and it actually makes a huge difference. लगता नहीं है कि कुछ करा है but करा भी है. So it's like that. And now I'm taking the same fluffy brush but this pink shade and I'm going to blush my cheeks. And just like that, our face is all complete. अब बस उसे set करना है. And for that, I use this makeup fixer natural from Swiss Beauty and I just spritz it all over my face. And now I'm taking my Maybelline highlighter in the shade 100 Molten Gold and just applying it on the high points of my face. A little bit here, everywhere because I love highlighter. And it's finally time for the eyes. And सबसे पहले हम करने वाले हैं अपने eyebrows. And for that I am using Sugar की eyebrow pencil in the shade 03 Woody Scooby. And मैं अपनी eyebrows बहुत quickly करने वाली हूँ because मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ that how I do my eyebrows. So for the eyes I am thinking I'll be doing something smoky eyes, but not black smoky eyes, but more of like a pink and black smoky eyes, if that makes any sense to you guys. So yeah, I am just taking a very light pink shade and I'm just going to apply it on my crease. Oh, by the way, I am using UCANBE Spotlight palette if that was not very obvious. So yeah, so I'm just using a very light pink shade on my eyes and it's quite pigmented and I'm just going to apply it on my crease. Beautiful. And फिर मैं इसे अपने eyebrows तक ले जाऊंगी just to create that gradient effect. Alright, so now I'm going to take a black eyeshadow for obvious reasons and it's a matte black eyeshadow, but I'm just placing it right on my outer corner
मेकिंग अ सॉर्ट ऑफ अ विंग, बट ऐसा कुछ बन जाए, हम ये आशा करते हैं। एंड नाउ वी आर क्लोजिंग आवर आईज एंड उसे बस मैं मर्ज कर रही हूँ अपने क्रीज में। एंड मैं अपने आईज को हाफ कवर कर दूंगी उससे, लाइक नॉट पूरा, बिकॉज हम क्रीज अपनी कट भी करेंगे अभी। So I'm just placing it, blending it, and I'm taking a small clean brush like this, and बिना कोई product लिए I am just going to blend this black shade यहीं पर ही, ताकि वो थोड़ा सा buff out हो जाए। And now with the previous brush जिस पे थोड़ा सा पिंक बचा हुआ है, हम बस अपनी क्रीज में उसे लगा लेंगे। And yeah, just that is it. I am quite happy with my eyes अभी भी, मतलब these are looking quite good. I am thinking maybe we should not cut the crease because I am so happy with the eyes ऐसे ही. Let's see. Now I am going to apply a silver shade right here, or I am thinking like a pink glitter. So पहले pink glitter लगा कर देखते हैं हम. So I have two shades. One is a lighter pink and the second one is a much darker pink. So पहले है light pink shade and this is the darker pink. I'm thinking the light वाला because dark वाला कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा. So I'm just applying it. ये भी ज़्यादा लग रहा है. थोड़ा थोड़ा लगाएंगे बस. I love this look. Can you see how pretty this looks? भाई साहब मज़े ही आ गए आज तो. And now I'm going to take a very small brush and उसे मैं अपने okay, that was a lot. And उसे मैं अपने inner corners में लगाऊंगी. Silver glitter लगा रही हूँ मैं यहाँ पर. I freaking love this look. And it's all done. मैं लाइनर स्किप कर रही हूँ because I don't feel कि इस लुक में लाइनर अच्छा आइडिया है. So I'm just going to use my mascara which is from Too Faced Better Than Sex mascara and it is so good. Like it's so good. It's worth every penny. So अब इस मस्कारा में से हम निकाल देंगे सारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट because we don't want that. इसकी वॉन्ड इतनी छोटी है. It's like it is actually a travel वाला प्रोडक्ट बट जस्ट सी द डिफरेंस. ये बेचारी ऐसे क्या ही बोलूँ. एंड दिस लुक्स सो नाइस, सो amazing. And now it's time for our lipstick and for that I am using this very new technique wali lipstick which is Nykaa Wonder Puff in the shade Blessed. It's a cushion lipstick. तो जब ये मेरे पास पहली बार आई थी तो मुझे पता नहीं था कि कैसे होता है ये, बट आपको पीछे से प्रेस करना होता है और आगे से प्रोडक्ट निकल जाता है which is very new and very weird for me and I like to apply it ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं लगाती हूँ बिकॉज ये बहुत पिगमेंटेड है एंड बहुत ज़्यादा डार्क रेड है. वैसे तो ये मैट लिपस्टिक है बट इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड वेरी स्मूथ एंड ये इतना ना चैप्ड लिप्स वाला इफेक्ट भी नहीं देता है. इट्स अ वेरी नाइस रेड कलर. I love this. I would say I am all complete now. Ouch. And this is the final look. Looking very much better, I would say. I actually love how the eyeshadows turned out. मुझे बिल्कुल भी expected नहीं था, as obvious, because हम पहले तो देखते नहीं हैं कि क्या करना है और फिर अंत में कुछ और ही कर देते हैं. But it's looking damn fine. I love the base, I love the eyeshadows. Now you guys tell me comment section में कि आपको इस पूरे look में, इस पूरे प्यारे प्यारे वैलेंटाइन्स लुक में सबसे बढ़िया क्या लग रहा है. इज इट द आई शैडो, इज इट द बेस, इज इट माई हेयर स्टाइल और इज इट मी और इज इट द लिप्स. सो या कमेंट डाउन बिलो. मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं सो यू गाइज कैन चेक देम आउट फ्रॉम देयर. एंड इससे पहले कि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाऊँ, लेट्स एंड दिस वीडियो राइट हेयर. आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम. आई लव यू ऑल सो मच. बाय.